أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. मोमिनो, अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं तो हमने उन पर आंधी छोड़ दी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे। और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है। जब वो लोग तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब तुम्हारी आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए और तुम अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, उस मौके पर मोमिन आजमाए गए और सख्ती से हिला हिला दिए गए। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था, और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ऐ अहले यसरिब
यहां तुम्हारे ठहरने का मकाम नहीं तो लौट चलो। और एक गिरोह उनमें से पैगंबर से इजाजत मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं। हालांकि वो खुले नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। और अगर फौजें अतराफ मदीना से उन पर आ दाखिल हों, फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फौरन करने लगे और उसके लिए बहुत कम तवक्कुफ करें। हालांकि पहले अल्लाह से इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे। और अल्लाह से जो इकरार किया जाता है उसकी जरूर पुरसिश होगी। कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और उस सूरत में तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को न अपना दोस्त पाएंगे और न मददगार। अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और वो लड़ाई में नहीं आते मगर कम। ये इसलिए कि तुमसे बुखल करते हैं। फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें उसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज तेज जबानों के साथ तुम्हारे बारे में बातें करें और माल में बुखल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही न थे, तो अल्लाह ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह को आसान था। ये लोग खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं गईं, और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि काश खाना बदोशों में जा रहे हैं और तुम्हारी खबर पूछा करें, और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई न करें मगर कम। Believers, remember how Allah favored you when the combined forces of the Quraysh and their allies came against you in the battle of Al-Ahzab, and we sent against them the forces of nature, a strong wind and hosts of angels that you could not see. And Allah is ever a close observer of your painstaking efforts and toilsome deeds. Recall how he favored you when they, your enemies, invaded you at Medina, from above you, from the highlands on the east, and from below you, from the valley to the west. And when your eyes were dazed in terror, and your hearts rose up to your throats, while some of you entertained diverse thoughts about Allah. That was the time when the believers were put to hard trial and were violently shaken. Recall the time when the hypocrites and those who carried a spiritual disease in their hearts said, Allah and his messenger only made us a false and delusive promise of victory. And recall when a party of them also said, O people of Yathrib, Medina, you can put up no stand in the face of the enemy. You had better go back to your homes or your old faith to save your lives. And a section of them asked the prophet for leave, saying, Surely our homes are lying exposed to danger, whereas they were not actually lying exposed, but they only sought to flee from the battlefield. And if entry of the enemy forces were effected in the town of Medina against them from its diverse quarters, and then they were incited to treachery and joined in the disturbance against the companions, they would have readily gone for it. But afterwards, as it happened, they could not stay there in their so-called undefended houses but a little while. And previous to that, they had made a covenant with Allah that they would not turn their backs. And a covenant made with Allah will have to be answered for. Say, it would be of no avail to you if you flee from death or the battlefield, and in case you do, you will not be allowed to enjoy yourselves but for a short while. Who will save you from the punishment of Allah, if it be his will to do you some harm? Or who will withhold his favor from you, if it be his will to show you mercy? And they will not, apart from Allah, find a patron or a helper for themselves.
Verily, Allah knows those of you who turn others away from fighting in the cause of Allah. And He knows also those of you who say to their brethren, "Come to us to follow the right course." But they themselves seldom join the fight in the cause of Allah. They are niggardly, having no desire to help you. But when danger is in sight, you can see them looking towards you, their eyes rolling like the eyes of one who swoons due to the agony of death. But when the time of danger passes away, they lash you tauntingly with the sharp edges of their tongues, being niggardly of any good coming to your way. These people have never in fact believed sincerely, so Allah has rendered void all their activities, and doing that is always an easy thing for Allah. They still think that the invading Confederates have not yet withdrawn. Should the Confederates come again, they would wish to be desert dwellers among the Bedouins in the desert, asking for news about you, whether you were safe or destroyed. And had they been among you, they would not have fought along with you, save a few.